Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. This is social studies class of grade 1. Students, we are studying lesson number 2. The name of lesson number 2 is My Family and Friends. My family means मेरा खानदान. And friends, friends का क्या मतलब है? मेरे दोस्त या मेरी सहेलियां. ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, लास्ट 2 लेसन्स में भी हमने मतलब लास्ट 2 क्लासेस में भी हमने लेसन नंबर 2 माय फैमिली एंड फ्रेंड्स की स्टडी किया है. ठीक है, हमने पढ़ा था कि फैमिली क्या होती है, कौन कौन से लोग मिलकर एक फैमिली बनाते हैं और फिर वो लोग किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद हमने फैमिली ट्री के बारे में पढ़ा. कल आप लोगों को फैमिली ट्री, खानदानी शजर नस्ब जो होता है वो सिंपल तरीका आप लोगों को सिखाया कि किस तरह फैमिली ट्री बनती है. आप लोग फैमिली ट्री किस तरह बनाएंगे, कल हमने एक वर्कशीट के जरिए आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था. और वही वर्कशीट आप लोगों को बुकलेट में भी मिले हुए हैं. आप लोग बुकलेट में वर्कशीट्स फिल अप करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जो 2 वर्कशीट आपको बुकलेट में सब्जेक्ट सोशल स्टडीज में मिले हुए हैं, वो दोनों वर्कशीट आप लोगों ने बुकलेट पे फिल अप करने हैं. वो अपने बुकलेट के ऊपर ही करने हैं. अच्छा, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे. और जो क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट है वो ओरल टेस्ट होगा. वो उस दिन होगा जिस दिन आप लोग बुकलेट सबमिट करेंगे स्कूल में. तो उस दिन आप लोगों से ओरल टेस्ट लिया जाएगा और आपको मार्क्स दिए जाएंगे. अंडरस्टैंड? अच्छा, टुडे आवर टॉपिक इज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 2. आज हम लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, आप लोग टेक आउट योर पेंसिल, ओपन योर रफ रजिस्टर और कॉपी. आप लोगों के पास जो भी है वो ओपन कर दें. यू विल नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने साथ नोट करें, आप लोग नोट करें कि लेसन नंबर 1 सॉरी लेसन नंबर 2 और नेम भी राइट करें अपने साथ रजिस्टर में. शाबाश. नेम, लेसन नंबर 2 नेम इज माय फैमिली एंड फ्रेंड्स. राइट डाउन. ओके, और एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है इस तरह अपने साथ नोट करें. क्लास 1 लेसन नंबर 2 है. ओके, दिस इज लेसन 2 माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, और क्वेश्चन आंसर्स भी नोट करें. Look at question number 1. शाबाश. Take out your pencil. आप, your parents can also help you. आप लोग पेरेंट्स जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को नोट करने में. ठीक है, look at question 1. What does the word family mean? Students, look at the question. What does, W-H-A-T, what, and look at the spelling. D-O-E-S is the spelling of does. Okay, right? टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग स्पेलिंग करेक्ट लिखिए. शाबाश. D-O-E-S. What does the word, T-H-E, the, W-O-R-D, word, family, F-A-M-I-L-Y, family, mean, M-E-A-N, mean? What does, I'm repeating the question. Look at the question. Look at your screen. W-H-A-T, what, D-O-E-S is the correct spelling of does. Okay student, write the correct spelling. D-O-E-S. What does the word family mean? अच्छा, क्वेश्चन का क्या मतलब है कि लफ्ज फैमिली का मतलब क्या है. What does the word family mean? फैमिली जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, कहते हैं कि इसका मतलब क्या है. फैमिली का मतलब बताएं. आंसर, look at the answer. Family means, I am going to
Explain the answer. Family means a group of people having blood relation. Family, I'm repeating the answer. Family means Family, family, MEANS means. Family means a group, 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 of PEOPLE, people, a group of people having, 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 blood relation, BLOOD, blood, RELATION, relation. Family means a group of people having blood relation. मतलब फैमिली का मतलब है कि वो तमाम लोगों का वो ग्रुप जिनका एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन होता है, एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता होता है, ठीक है। वो तमाम लोग जो एक दूसरे के साथ खूनी रिश्ता रखते हैं वो एक फैमिली कहलाते हैं। आप लोग ये आंसर लर्न करेंगे, ओके। जब आप लोग ये सब नोट करेंगे फिर आज का ये आपका होमवर्क भी है कि क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लर्न करेंगे ओरल टेस्ट के लिए, ओके। फैमिली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ब्लड रिलेशन, ओके। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं। क्वेश्चन 2 इज what do parents mean? Look at the question. What do parents mean? WHAT, what, DO, do, PARENTS, parents, MEAN, mean. What do parents mean? Question का मतलब क्या है? What do parents mean? Parents का क्या मतलब है? मतलब parents, किन लोगों को parents कहा जाता है? Answer. Look at the answer, note down the answer, shabash. Parents mean mother and father. Look at the answer. Parents, 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 mean, MEAN, mean. Parents mean mother and father. MOTHER, mother. FATHER, father. Parents mean mother and father. Look at question number 2 again. Note down the question. What do parents mean? पेरेंट्स का क्या मतलब है? मतलब कि पेरेंट्स किन लोगों को कहा जाता है? आंसर, पेरेंट्स मीन मदर एंड फादर। पेरेंट्स का मतलब है माँ बाप, अम्मी अब्बू। मतलब मदर एंड फादर को ऐसा बोल हम पेरेंट्स बोलते हैं ना। पेरेंट्स मीन मदर एंड फादर। शाबाश, नोट डाउन द क्वेश्चन विद यू। Now moving towards question number 3. Okay, students, look at question number 3. Note down the question with you. What do siblings mean? Question 3 is, look at the question number 3, shabash. Note down question 3 with you. What do siblings mean? WHAT, what, DO, do, siblings, SIB, sib, LINGS, links, siblings, mean, MEAN, mean. What do siblings mean? Siblings का क्या मतलब है? Siblings किन लोगों को कहा जाता है? ठीक है, look at the answer, आंसर की तरफ देखें। Siblings mean brother and sister. Look at the answer, shabash. Siblings, SIB, sib, LINGS, links, siblings. Siblings mean brother and sister. MEAN, mean brother. Look at the spelling of brother, BROTHER, brother. Note down the answer, shabash. And AND, and sister, SISTER, sister. Siblings mean
brother and sister. Siblings का मतलब है बहन भाई, भाई बहन या बहन भाइयों को siblings कहा जाता है. अच्छा, brothers and sisters को as a whole हम siblings बोलते हैं. Siblings mean brother and sister. Look at question 3 again. What do siblings mean? Answer. Siblings mean brother and sister. Okay. Now moving toward question number 4. This is the last question. Note down question number 4 with you, Shabash. This is very easy question for you people. What is the name of your best friend? Question number 4. What is the name of your best friend? BEST, best, FRIEND, friend, best friend. आपके सबसे अच्छे दोस्त का, सबसे बेहतरीन जो साथी है आपका, उसका नाम क्या है? And the answer is optional. आप लोगों ने खुद अपनी चॉइस में ये ब्लैंक फिलअप करना है और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पर राइट करना है. ओके. What is the name of your best friend? आपके सबसे बेहतरीन दोस्त का, सबसे गर्ल्स जो है उनकी तो सहेलियां होती है ना, जो सबसे अच्छी सहेली है उसका नाम क्या है? आंसर. जाहिर है सबके फ्रेंड्स होते हैं ना, तो उसमें से एक फ्रेंड कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो आप लोगों ने उनका नाम यहाँ पे, एक फ्रेंड का नाम नेम यहाँ राइट करना है. आंसर. द नेम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज ब्लैंक है, तो ब्लैंक में आपने उनका नाम अपनी चॉइस से ही राइट करना है. ओके. द नेम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज, फिलअप करना है ये ब्लैंक, उसमें अपनी चॉइस से अपनी फ्रेंड का नाम बताएंगे आप लोग, या इधर राइट कर ले शाबाश. जब ओरल टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें आप फिर ओरली वो बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन आंसर्स अगेन. अगर आप लोगों ने अभी ये नोट नहीं किए तो फिर से नोट करें शाबाश. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 अगेन. व्हाट डज द वर्ड फैमिली मीन? Students, I am repeating again that the spelling of does is DOES. Okay. Here is a mistake. The spelling is DOES. Shabash, आप लोग correct spelling लिखिए. What does the word family mean? Answer. Look at the answer. Family means a group of people having blood relation. Write spellings from your screen. Look at your screen, Shabash. Write the answer. Family means a group of people having blood relation. वो तमाम लोग जिनका एक दूसरे के साथ खूनी रिश्ता होता है, वो सब लोग मिलकर एक फैमिली बनाते हैं. ठीक है, और वो एक फैमिली कहलाते हैं. Look at question number 2. I am repeating again. What do parents mean? What do parents mean? Answer. Parents mean mother and father. Parents mean mother and father. Students, these are very easy question answers for you people. Okay, you will learn it. You will learn these question answers. This is your homework. Now look at question 3. Question 3 की तरफ देखिए शाबाश. Question number 3 is, what do siblings mean? Siblings किसे कहते हैं? Answer. Siblings mean brother and sister. कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था ना कि मैम सिबलिंग्स किसे कहते हैं. दिस इज योर आंसर. ओके. सिबलिंग्स मीन ब्रदर एंड सिस्टर. बहन भाइयों को सिबलिंग्स कहा जाता है. क्वेश्चन 4.
What is the name of your best friend? आपके सबसे बेहतरीन साथी का, बेहतरीन दोस्त का नाम क्या है, वो आपने बताना है। यहाँ पर the name of my best friend is, ये blank fill up करना है, ठीक है। This answer is on your choice, अपनी choice से सब बच्चे अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम यहाँ पर राइट कर दें। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट आपको बुकलेट में क्लास 1 की बुकलेट में मिला हुआ है उसमें लेसन 1 और लेसन 2 इंक्लूड है, ठीक है। लेसन और लेसन 2 उसमें इंक्लूड है, तो आप लोगों ने उसके लेसन 1 और लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर ओरली लर्न करने हैं, ठीक है। और इसके साथ जो रिलेटेड वर्कशीट है, वर्कशीट आप लोगों ने बुकलेट पे ही फिल अप करना है। उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, बुकलेट पर आपने वर्कशीट फिल करने हैं, 2 वर्कशीट आपको मिले हुए हैं, वो उसके मार्क्स आपको बुकलेट पे मिलेंगे जब आपने ये फिल अप कर लिया हुआ हो तो। और ओरल क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट ऑन द डे ऑफ सबमिशन ऑफ द बुकलेट आप लोगों से लिया जाएगा। जिस दिन आप लोग आएंगे पेरेंट्स के साथ सब बुकलेट सबमिट करेंगे स्कूल में, उस दिन आपका सोशल स्टडीज का ओरल टेस्ट भी लिया जाएगा और उस दिन आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने लेसन नंबर 2 माय फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आज हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमने वर्कशीट भी किया है। Okay students, now if you want to ask any question, shabash, raise your hands and ask the questions. Shabash, do you want to ask any question? Okay students, और ये जो बुकलेट आप लोग कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करेंगे ना, उसमें सारे टेस्ट भी फिलअप करके लाएंगे, तो वो टेस्ट टीचर्स चेक करेंगी और वो वापस आप लोगों को ही मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों को रिटर्न किए जाएंगे। Zohaib Khatak, yes, बच्चे, what do you want to ask? What is your question? मैम क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा पढ़िए। Question number 2. Okay. क्वेश्चन नंबर 4। 4. Okay, look at your screen. Question number 4 is, what is the name of your best friend? Yes, शाबाश, अपने साथ नोट करें, what is the name of your best friend? आपके सबसे बेहतरीन दोस्त का, साथी का नाम क्या है? The name of my best friend is dash. आप लोग इस dash में नेम राइट करेंगे। Yes, मोहम्मद ताहिर, बच्चे, what do you want to ask? What is your question? शाबाश। मैम जरा क्वेश्चन नंबर से जरा प्यार से बोले। Question 2. क्वेश्चन 3। 3. Okay, okay. I am going to repeat the question. What do siblings mean? शाबाश, नोट करें, स्क्रीन पे भी आ रहा है। What do siblings mean? Siblings किसे कहते हैं? What जी, do siblings mean? yes. Answer is siblings mean brother and sister. Repeat करें मेरे साथ, शाबाश। Sibling mean brother and sister. Yes, very good, शाबाश। Okay, student, that's all for today. Inshallah, in my next online class, we will discuss something more. Okay, thank you. Allah Hafiz.